అప్డేట్స్ చూద్దాం. ఆల్ ఇండియా బిల్డర్స్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో బిల్డర్స్ కన్వెన్షన్ ఇవాల్టి నుంచి 3 రోజుల పాటు జరగనున్నాయి. రామోజీ ఫిలిం సిటీలో జరుగుతున్న ఈ కార్యక్రమాన్ని కేంద్ర మంత్రి వెంకయ్య నాయుడు, సీఎం కేసీఆర్ జ్యోతి ప్రజ్వలన చేసి ప్రారంభించారు. బిల్డర్స్ కు సంబంధించి సమస్యలపై ఈ కన్వెన్షన్ లో చర్చిస్తారు. దీనికి దేశవ్యాప్తంగా 1200 మంది కాంట్రాక్టర్లతో పాటు విదేశాలకు చెందిన ఇంజనీర్లు, కాంట్రాక్టర్లు పాల్గొంటున్నారు. ప్రస్తుతం సభలో సీఎం కేసీఆర్ మాట్లాడుతున్నారు. ఇప్పుడు లైవ్ చూద్దాం. मुझे तो समझ में नहीं आया. जाते जाते उनके सोच ये था कि हम तो पावर में आने वाले नहीं है और जो सरकार आने वाला है उसके हाथ पैर भी बांधो. वो कुछ कर नहीं पाए और उसके ऊपर बात का बतंगड़ बना के पार्लियामेंट में बड़ा गड़बड़ करते हैं. लैंड नहीं है तो इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ से बनेगा? लैंड पुल तो करना ही पड़ेगा. इफ इट इज फॉर द सोसाइटी, इफ यू वांट टू कंस्ट्रक्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट, सम पीपल हैव टू लूज द लैंड. ऑफ कोर्स वी हैव टू टेक केयर ऑफ देम, वी हैव टू रिहैबिलिटेट देम इन ए प्रॉपर मैनर, बट लैंड हैज टू बी पूल्ड. थिंग्स कैनॉट जस्ट हैंग इन द एयर. लेकिन उन्होंने उसको इतना रिजिड बना के चला गया और उसके खिलाफ अगर कोई बोलते तो उसको देशद्रोही कहने का मतलब वो स्लोगन उठा लिया, विच इज़ वेरी बैड. दे हैव टू बी सफिशिएंटली एक्सपोज्ड. हम यहाँ पे ये जो माया जाल है, इंद्रजाल है, जो कांग्रेस गवर्नमेंट हमारे ऊपर टोक के गया, उससे बाहर आने के लिए मजबूरन हमारे को एक दूसरा अलग रास्ता, बाईपास रास्ता अपनाना पड़ा. वी हैव इश्यूड ए जीवो कॉल्ड 123. In the state of Telangana now we are not acquiring the lands, we are only buying the lands through this GO. There is one project called Palamuru Ettipotala Pathakam, for which I think for the first time in India, before calling tenders, the land acquisition process is over. The land is kept ready. The working agency can come and just start working. This kind of a situation we wanted to create in the state of Telangana, and this should be done in the entire country by a regulation, by a policy by the government of India. We have also announced an incentive of 1.5% of the total project cost as and when the work is completed in the desired time, in the stipulated time by the working agency. We are providing. कॉन्ट्रैक्टर लोगों से मतलब वर्किंग एजेंसी से मेरा भी एक गुजारिश है, आपको अपने आप के तौर पर भी कुछ रिफॉर्म करना चाहिए. हमारे पास 3 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जहां आए 21% लेस में पकड़ लिए. 20% लेस में पकड़ के करेंगे कहाँ से काम? खाएंगे क्या? ये ऐसा अंधाधुन काम करना भी उचित नहीं है. ऐसे कॉन्ट्रैक्टर्स को सरकार ब्लैक लिस्ट ना करे, आपके बिल्डर्स एसोसिएशन खुद ब्लैक लिस्ट करे और डिस्करेज करे ताकि जेन्युइन लोगों के काम में वो अड़चन ना डाले. इन चीज़ों पे भी आप लोगों को सोचना चाहिए. वेंकैया नायडू जी ने काफ़ी कुछ आपको बता चुके हैं, हम तो उनके साथ ही है. आज एक बात हमें भी फख्र है, पहले प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया था जहां राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भिखारियों की तरह देखा जाता था, लेकिन आज टीम इंडिया जो नीति आयोग है, हमारे प्रधानमंत्री जो प्रगतिशील प्रधानमंत्री है, जो रिफॉर्म ओरिएंटेड प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने सारे लोगों को साथ ले चलने का उनका नारा ये था. द फर्स्ट स्पीच ऑफ नीति आयोग, स्पीच वाज आई फॉर वन एंड द प्रेजेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्ट्रांगली बिलीव्स दैट द रियल डेवलपमेंट, इंडियाज डेवलपमेंट इज स्टेट्स डेवलपमेंट. इंडिया डेवलपमेंट लाइज, राज्यों के विकास में ही देश का विकास है. डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री लाइज इन द स्टेट्स, डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट्स. इट वाज द स्लोगन. सो नाउ वी आर पार्ट ऑफ द टीम इंडिया. वी आल्सो फॉर्म part of the formulation. We also contribute lot of ideas. Whenever there is opportunity, and we have a very good prime minister in place, he hears very patiently. There is a session conducted after the official meeting is over. He interacts with all the chief ministers over the lunch or the dinner, and he spends a lot of time. He asks that I am with an open mind, don't hesitate to contribute ideas. Such a prime minister is there. Let us hope that some brighter laws will come in place. And as said by Mr. Venkaiah Naidu, he already promised you that after your deliberations in this convention, he has already promised you to take you people in a delegation to the Honorable Prime Minister. I hope some better results will come out of your delegation with the help of Sri Naidu Garu. So I wish you all success, because I have to facilitate Mr. Naidu to go to Vijayawada and catch up another program like this, which he has already promised there. So now he has to take off and reach Vijayawada to catch up that program. I wish all success. I wish you, all of you, a pleasant stay. You have luckily chosen Ramoji Film City, which is the jewel of Hyderabad, which is the lovely place of Hyderabad, the bright spot of Hyderabad, and you will certainly enjoy, I hope, a better, pleasant stay for all of you. Thank you so much.
Thank you so much for the kind words, sir. We'd now like to give mementos to our Honorable Minister.